India's astounding diversity of religions, languages and cultures is unique and unparalleled. The mighty Himalayas, flying high all above the sky, and varied cultures, traditions with many advanced developments in science and technology has made our country an incredible land. For thousands of years, people of different religions have coexisted with utmost faith in the integrity of our country. So friends, I am Nidhi, and in today's episode of My India, I will show you some of the most compelling and fascinating stories from across the large geographical boundaries of our country. India, a country with diverse cultures and ancient civilization, has the oldest pilgrimage tradition in the whole world. The practice of pilgrimage in India is so deeply embedded in the cultural psyche, and the number of pilgrimage sites is so large that the entire subcontinent may actually be regarded as one grand and continuous sacred place. So today in our series of cultural stories, we take you to the Srikhand Mahadev Yatra, regarded as one of the toughest pilgrimage sites in India. Let's take a look. Such was the enthusiasm during the Srikhand Yatra, when pilgrims from different parts of the country thronged the Kullu region of Himachal Pradesh to be a part of this pilgrimage. Considered as one of the most challenging religious Himalayan treks in India, the pilgrimage is dedicated to Lord Shiva. According to legends, demon named Bhasmasur preached and pleased Lord Shiva through heart penance, to which Lord Shiva responded and accorded him a Bhasma Kangan, through which he can turn anything into ashes. Drenched in his ego and pride, Bhasmasur tried to use it on Lord Shiva, due to which Lord Shiva moves into the cave and took help of Lord Vishnu. Vishnu transformed himself into a female enchanter Mohini and tricked Bhasmasur to touch his own head and burn himself with his own hands. Thus, the mountain top where Lord Shiva stayed is known as Srikhand Mahadev. A total of 10-day pilgrimage starts from Jaun, where one can admire the beauty of Mother Nature sitting amid mountains, rivulets, small houses, temples, most important, apple orchards and rajma fields. श्रीखंड महादेव यात्रा पौराणिक यात्रा है और ये देवढांग से होते हुए निर्मल माता महामाई मंदिर से, जाऊं माता शैलाशनी मंदिर से होते हुए और यहाँ सिंगार पहला पड़ाव सिंगार से यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हुए सभी यात्री हिंदुस्तान के हर कोने से आने वाला यात्री यहाँ पे अपनी पहले रजिस्ट्रेशन और मेडिकल चेकअप्स करके आगे बढ़ता है। काली घाटी, काली टॉप से आगे भीमतलाई और भीमद्वार, तब पार्वती बाग और उससे आगे नैन सरोवर और फिर इस प्रकार से श्रीखंड महादेव तक श्रद्धालु पहुँचते हैं। रास्ता बहुत ही दुर्गम और टफ है और फिर भी यात्रियों में इतना जोश और इतना जुनून है कि यात्री जो है मतलब बिल्कुल अपने हर्ष और उल्लास के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं और वापस भी आते हैं। During the pilgrimage, the whole valley of Kullu echoes with the songs of Lord Shiva, so as to motivate the pilgrims and make them feel close to God. Several arrangements are also done by the local administration to facilitate the pilgrims, such as medical checkup, ambulance service and registration at first base at Singhar, which comes after 3 kilometers trek from Jaun. Singhar was named after a brave man who dared to live here and established a village, and is the last habitat of civilization on this route. Community kitchens are also organized for the pilgrims here, where they can have proper food. The pilgrimage takes you amidst the lavish and beautiful setup of mighty Himalayas to the top of the Srikhand Mahadev peak, where one gets to witness a 72 feet high pinnacle of rock dubbed as Shivling at the 18,000 feet above sea level. Special attention is also paid towards cleanliness, and even the pilgrims are advised not to destroy the natural beauty or throw garbage, for which several committees are also appointed. आज 15 जुलाई से हमारी ये श्रीखंड यात्रा शुरू होती है। इसमें खास तौर पर ध्यान दिया जाता है एक तो स्वास्थ्य का
और स्वच्छता का मेन स्वच्छता जो जिसलिए मैं आज इतनी सारी महिलाएं महिला मंडल लगभग 4 महिला मंडल एकत्रित हुए हैं। स्वच्छता का ध्यान रखना है। यात्रियों से भी अनुरोध है, विनती करते हैं, सफाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, नशा ना करें और काफ़ी हाइट में जाकर जो हमारे हरियाली फूल पेड़ पौधे उसमें हाथ ना लगाएं ताकि हमारी प्राकृतिक सुंदरता खराब ना हो। ये हमारी एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है जो श्रीखंड यात्रा है। The pilgrimage of Srikhand Mahadev is considered as the second Amarnath Yatra of the country and is a perfect blend of adventure, faith and culture of the Hindu pilgrims. Bareilly in Uttar Pradesh is known by the name Nath Nagri, known for the 4 Shiva temples located in 4 corners of the region. Apart from that, the city is also a center of religious harmony due to the presence of sizable number of Hindus and Muslims who have lived and prospered together amicably for centuries. The same can be witnessed at a homeopathy clinic in the heart of the city, which has been spreading the message of peace and brotherhood. Have a look. In a first glance, this place looks like any ordinary homeopathy clinic with the doctor attending to patients while other staff members go about their tasks. But what makes Wadood's homeopathy clinic unique is the message of peace and brotherhood that it spreads. Wadood's homeopathy in Bareilly is run by a Muslim. He is taking forward the legacy of Bareilly's Ganga Jamuni Tehzeeb through his clinic. यहाँ पर तकरीबन 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर की नज़र में सब बराबर होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, डॉक्टर की नज़र में सब बराबर होते हैं। और यही हम 5 साल मेडिकल कॉलेज में सीखते हैं और वही चीज़ हम यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मरीज़ों में भी हम कोई भेदभाव नहीं करते। यहाँ मेरा स्टाफ है, हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं और इतने सालों में कई हिंदू लड़के आए और चले गए। सबके साथ अच्छा व्यवहार रहता है, अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं और उन सभी लोगों को, जैसे अभी ये पूजा है, ये भी तकरीबन 6 साल से काम कर रही है। इससे पहले दूसरे जो लड़के थे वो भी कुछ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पर हम सबको अपने बच्चों की तरह से, अपने छोटे भाई बहनों की तरह से प्रोत्साहित करते हैं पढ़ने के लिए भी, क्योंकि ये लोग काम के साथ साथ हम चाहते हैं कि अपना करियर भी बना के यहाँ से जाएं जब जाएं। और इस तरीके से हम एक जो बरेली की गंगा जमनी तहज़ीब है उसको आगे बढ़ाने का और उसको जारी रखने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी नज़र में एक आपसी भाईचारे की सबसे बड़ी कीमत है और सबसे बड़ी अहमियत है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान तो फिर बहुत छोटी चीज़ रह जाती है इंसानियत के आगे। It is not only Dr. Sharik but also other staff members working in the clinic who are glad to be working with and for the people of different communities. Belonging to different communities, they feel connected with each other. तो मुझे 12 सालें हो गई हैं। इससे पहले यहाँ पर मेरे साथ में इस वक्त पूजा सक्सेना यहाँ पर साथ में मेरे काम करती हैं, जो कि मेरी बहन की तरह हैं। हम सब लोग साथ में आपस में दवाई भी बनाते हैं, सब काम करते हैं, बड़ी मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। जब दिवाली होती है तो पूजा जो है अपने घर से मुझे बेसन के सेव वगैरह और मठरी और ये सब चीज़ ला के देती हैं। और जब ईद आती है तो वो मुझसे कह देती हैं कि भैया मुझको सेवइयाँ वही वाली चाहिए जो मीठी मीठी होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। मैं सेवई लेके आता हूँ, उनको खिलवाता हूँ। हम आपस में बहुत यहाँ पर प्रेम से रहते हैं। मुझे यहाँ काम करते हुए 6 साल हो चुके हैं, जिसमें मुझे इतना टाइम में कभी कोई ऐसा फील नहीं हुआ है कि वो एक मुसलमान है और उनके साथ में मैं काम करती हूँ। मेरा उनके साथ में काफ़ी अच्छा तालमेल है और हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मतलब मुझे ऐसा कोई कभी फील नहीं हुआ है कि जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ हुई हो। और मुझे यहाँ काम करते हुए अच्छा लगता है और हम लोग अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कभी रियलाइज़ नहीं हुआ है, कभी उन्होंने मुझे ऐसा रियलाइज़ कराया ही नहीं है कि जिससे मुझे किसी तरह की यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सके। The patients coming to this clinic feel very connected to Dr. Sharik irrespective of their religion. Patients consider Dr. Sharik as a family member and he in turn treats his patients the same way. लगभग 5 साल से मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में हूँ, डॉक्टर शारिक बदूद के। यहाँ मैं एज ए पेशेंट आया था, पर धीरे धीरे इतनी घनिष्ठता बढ़ती चली गई। आज डॉक्टर साहब मुझे अपने छोटे भाई जैसा प्यार करते हैं और मैं भी उनको बड़े भाई जैसा सम्मान करता हूँ। मैंने उनका देखा कि यहाँ उनका जो स्टाफ है उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। वो जब यहाँ मैं देखता हूँ कि पता ही लगता है कि यहाँ ऐसा लगता है कि सब लोग घर में एक फ्लो में काम कर रहे हो, जैसे घर में लोग काम कर रहे होते हैं।
मुझे लगता है कि डॉक्टर सारिक बदूद जैसा आदमी या सम्मानी व्यक्ति मुझे लगता नहीं कि मुस्लिम बरेली में कोई पाया जा रहा है। यहाँ इस क्लिनिक से मैं देखता हूँ कि यहाँ सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द जैसा क्लिनिक यहाँ है। यहाँ हिंदू मुस्लिम जैसी कोई विशेष बात ऐसी नहीं जहाँ आपको पता लगे कि आप मुझे आज तक पता नहीं लग पाया कि मैं हिंदू होने के बाद कि मुझे इतना प्यार करते हैं जैसे मैं उनका छोटा भाई हूँ और मुस्लिम हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं डॉक्टर सारिक बदूद का छोटा भाई हूँ। This is not a one-off example in Bareilly, but several such examples can be found across the country where Hindus and Muslims have stood beside each other, strengthening secular bond of the society. Now, a roundup of some of the major stories that made news recently. Australian Foreign Minister Julie Bishop met Prime Minister Narendra Modi in New Delhi recently. The two leaders discussed issues of bilateral interest during the meeting. The Australian Foreign Minister also addressed an Indo-Pacific oration where she underlined the importance of respecting and contributing to international law for peace and prosperity in Indo-Pacific alliance. The greatest hope for peace and prosperity in the Indo-Pacific lies in all nations respecting and contributing to international law, to protect national sovereignty and strengthen the norms that guide relations between countries. India and Australia had agreed to make a fresh push on a proposed bilateral comprehensive economic cooperation agreement during Prime Minister Malcolm Turnbull's visit to New Delhi in April this year. A three-day exhibition was recently held showcasing Mysore's traditional paintings. Over 150 paintings were put up in exhibition depicting mostly Hindu gods and goddesses. The paintings on display were from organizers' personal collection, which was open for sale as well. Mysore painting style itself has its own anatomy, its own color scheme, its own composition. But some of them have been painted by the contemporary artists of 50s and 60s, where we can definitely notice a deviation from the mainstream of the Mysore traditional school. Narendra Kumar Gupta of Gujarat, native state of Prime Minister Narendra Modi, is one of the many residents who have turned to solar power to bring down their electricity bills and reap the benefits of a government scheme. Minister Vijay Rupani launched a rooftop solar power scheme to combat climate change and scale up renewable power generation in the state. Under the scheme, residents who chose to set up solar panels on their rooftops will be entitled to subsidies. The government will give a subsidy of Rs $155 for commissioning a unit of 1 kilowatt and of $310 for a unit of 2 kilowatt. 2 किलोवाट का मैंने लगवाया है, तो मेरा ये पर डे अप्रोक्सीमेट 10 यूनिट जैसा होता है जनरेट। तो उसमें मुझे क्या है कि अपना बिल में मेरे को फ़ायदा होता है। जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें है कि जितना मैंने जनरेट किया है और जो मैंने यूज़ किया उसमें प्लस माइनस होके मुझे एक तो जनरेशन उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल में फ़ायदा हुआ, दूसरा इसमें मुझे क्या सब्सिडी भी मिली थी, तो उसका भी मुझे है क्या जो कॉस्टिंग आया जो एग्जीक्यूशन का वो भी कम हुआ। और बाकी क्या है कि जो अपना पॉल्यूशन वगैरह जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो रहती है उससे भी है क्या फ़ायदा ही होता है। The rapidly falling cost of solar power has ignited interest in its potential in Asia's third largest economy, which relies on coal for 3/5 of its energy needs while solar supplies less than 1%. Prime Minister Modi has set a target of raising India's renewable energy generating capacity to 175 gigawatts by 2022, requiring about $100 billion in investments. India and countries around the world are deliberating over reducing carbon emissions. Several international conferences are held throughout the year to protect the environment. So today in our series of Asia Buzz, we will see how Japan is moving to protect environment by reducing carbon dioxide emission. Recently, Yokohama City demonstrated the building of a low-carbon hydrogen supply chain model using wind power, which helps achieve zero carbon dioxide emissions. A report. The government of India has set a target of raising the country's renewable energy generating capacity to 175 gigawatts by 2022 as part of the fight against climate change.
Renewable energy production is one of the major challenges, not only for India, but for major economies around the world. Taking a cue from this, Japan's Yokohama City will participate in a trial project that demonstrates the building of a low-carbon hydrogen supply chain model using renewable energy in the Tokyo and Yokohama coastal region. It will use electricity generated from the Hama wind power plant near the center of Yokohama to create hydrogen. The production equipment using wind power will achieve zero carbon dioxide emissions. The hydrogen energy storage will use reusable batteries of hybrid vehicles to store energy so it can be built with care for the environment. In addition, it will use a simple hydrogen-filled car, ethos, in Japan to supply hydrogen energy to power forklifts operating in markets and factories. When this project was exhibited at the 50th annual meeting of the Asian Development Bank in Yokohama in May, the feedback from participants were astonishing. Preliminary calculations estimate the reduction of carbon dioxide greater than 80% compared to conventional means using this low-carbon hydrogen supply chain. 今回のプロジェクトは、CO2 フリーの水素を作り出して、その上で、域内で、活用していくというプロジェクトというところの特徴があります。この5月に行われた ADB の総会の中でも大変このプロジェクトについて大きな反響をいただいています。一番のポイントですけれども、水素を作り出していく過程では風力発電という中で電力を貯めていくことにちょっと時間差が生じると。水素を蓄積いたしまして、蓄積した水素を必要に応じてフォークリフトなどに充填していくということの貯蔵貯める技術というものが、かつてない最新の技術というふうに考えています。To promote Japanese corporate business activities and organizations, technology and services in India and ASEAN member countries, Catch Asia Media Network organized its 5th annual general meeting in Tokyo. In addition to terrestrial broadcasting, multimedia delivery to each country has been introduced via active web streaming and SNS delivery. It will help promote Japanese technology and products to India and ASEAN countries. Catch Asia Media Network project is have such a kind of these things and give us for more contents, and we can use this content to gain more knowledge of our audience. Member partners have been actively communicating so as to introduce activities for collaborating and exchanging of opinions of promoting with Southeast Asia. It's been 5 years now. We have been distributing the Catch Asia news content to various platforms, the TV channels, multimedia, print, and social media itself, and the reach is tremendously high. It's reaching to every class of people, from rural areas to urban areas, to young population to old population. So it's very effective. Catch Asia Media Network aims to expand its media coverage to countries in the Middle East and Africa. God created man in his own image. In the image of God, he created him. He created mankind but has not divided it into different religions. These regimented religions are man's own creation. In spite of this, people can still live in peace if they respect each other's religion. This was recently witnessed in the Pulwama district of Jammu and Kashmir, where one religious community was seen performing the last rites of a person belonging to other religious community. It is said that if we love all the religions equally, then the question of hatred and conflict will never arise. These words were proved right during the funeral of a 50-year-old Kashmiri Pandit Tej Kishan, the resident of Trichal village of Pulwama district in Jammu and Kashmir. The last rites of the deceased were attended by around 3,000 people belonging to different communities. They not only participated in it but also did all the arrangements of the funeral. हवाले से मतलब यहाँ सब जो अंत संस्कार इसका किया गया वो मतलब मुसलमान लोगों ने किया है
मुसलमान लोगों ने किए हैं। लगभग उसमें 99% तो लोग मुस्लिम थे। सब कुछ मतलब वो चिताई पर वो लकड़ी लेना, वो काटना, वो सब मुसलमानों ने किया है। सब मुसलमानों ने किया है। वहाँ फिर आग लगाया गया उस चिताई को, मतलब वो मुसलमान ने किया है। वो फिर वो उसको क्या बोलते हैं, वो साए जलाना, वो मैंने खुद वो जलाया, वो आग मैंने जलाया। फिर उसके इर्द गिर्द जो चक्कर लगाए गए, हालांकि मैं मुस्लिम हूँ, मैंने भी इसके इर्द गिर्द वो चक्कर लगाए हैं। मतलब इतना भाईचारा है, सब लोग रो रहे थे, खुदा की कसम। बहुत मतलब यहाँ बिल्कुल भाईचारा है। ये हमारे मतलब भाई हैं, ये मतलब ये हिंदू है, हमारा अंकल जैसा है। हम मतलब हम उनके साथ हैं, उनके दुख दर्द में बिल्कुल उनके साथ हैं। और मुझे मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम यहाँ भाई जैसे हैं। Rising above religious lines, Muslim people actively took part in the funeral of a Hindu. Be it making of flower garlands for the body or carrying it to the cremation pyre, Muslim community took part in each and every Hindu ritual. According to the relatives and neighbors of the late Tej Kishan, he was a great example of communal harmony as he decided to stay back in the Kashmir valley with his Muslim brethren during the tumultuous years of 90s when all Pandits were leaving the region. हम आकूरा मटन जो इलाके हैं, ये तेज किशन इस इलाके का भाईचारे का सबसे माना हुआ पंडित था। इसका लड़का है वो टाहब में रेडियो दुकान। भाईचारे के लिहाज से यहाँ हज़ारों लोग आते थे जाते थे, ये सबका साथी था। आज अचानक इसका एक्सीडेंट ये हो गया, ये पैरालिसिस हो गया, तो इसलिए हम भी मटन से आए यहाँ। तो हम जो भी यहाँ गाँव वाले थे वो सब यहाँ आए, उन्होंने इसका साथ दिया, इसके मरघट तक ले लिया। तो जो भी चीज़ यहाँ ज़रूरत थी उन्होंने खुद लाया यहाँ। इसका हौसला, हमको हौसला दिया, हमको सब कुछ दिया। इस मौके पर जब ये मेरा छोटा भाई यहाँ बेचारा फौत हुआ, यहाँ पंडू के बहुत चंद घर हैं, तो यहाँ की बरादरी ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के हमारे भाइयों ने, सब मुसलमान, उन्होंने जिस तरीके पर यहाँ बरादरी का जज्बा दिखाया आपस में, उसका ये जैसे उनका अपना कोई अजीज़ चल बसा है, उसके अलविदाई के लिए ये सब लोग तन मन यहाँ आए हैं। इनकी तमाम जो है हमदर्दियाँ, इनकी तमाम जो हैं कुंभा के साथ जो इस वक्त बेचारे परेशानी में हैं, उनको डार्स दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी दूसरी अफदाई कर रहे हैं। Thus, the effect of one man who showed courage at that time when others decided to quit has become a medium of uniting people of different religious communities. A group of 45 women set out from Surat city of Gujarat on an arduous 10,000-kilometer long road trip to the Himalayan town of Leh to create awareness about protecting and educating the girl child. The rally was organized to take forward Prime Minister Narendra Modi's Beti Bachao Beti Padhao campaign aimed at improving India's child sex ratio, the number of girls born for every 1,000 boys, and gender equality through access to education. It is a social campaign of the Government of India that aims to generate awareness and improve efficiency of welfare services intended for girls. The scheme was launched with an initial funding of $16 million. Speaking on the occasion of International Day of Girl Child in 2014, the Prime Minister Narendra Modi had called for eradication of female feticide. The Beti Bachao Beti Padhao scheme was launched on the 22nd of January 2015 by Prime Minister Modi. In August 2016, Olympic 2016 bronze medalist Sakshi Malik was made brand ambassador. The hashtag Selfie with Daughter was promoted on social media in June 2015. हम बाइकिंग क्वींस, हमारा ग्रुप का नाम बाइकिंग क्वींस है। हम सूरत बेस्ड महिलाओं के लिए काम करते हैं। हम लोग बाइक चलाते हैं सोशल कॉज के साथ। जैसे हम इस राइड पे जो जा रहे हैं उसका मोटो है सशक्त नारी सशक्त भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और
स्वच्छ भारत का मोटो लेके हम लोग चल रहे हैं। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण के अंदर हम लोग एजुकेशन किट जो अलग अलग गाँवों में है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को ज़रूरत है वहाँ पे। स्वच्छ भारत के हिसाब से हम लोग जो डिस्पोजेबल डस्टबिन्स है उसका प्लान आउट करेंगे, जहाँ पे ये कूड़े कचरे की प्रॉब्लम है वहाँ पे हम लोग को डिस्पोजेबल डस्टबिन्स दे सके, लोगों का अवेयरनेस कर सके, और जहाँ पे NGOs है जो उनको नहीं सहायता मिलती उनको सहाय पहुंचा सके, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, गवर्नमेंट की स्कीम है उन तक पहुंचा सके, वैसा हमारा मोटो है इस राइड के। The women riders aged between 20 and 41, who are also professional bikers, doctors, students and housewives, will travel through 15 states before finally reaching Khandurgla in Ladakh on 15th August. That's all we have for you this week. Your comments and suggestions are important to us. Do give us your feedback at myindia@an9.com. Now signing off with a glimpse at hundreds of devotees who thronged the streets of Hyderabad city in Telangana to mark the Hindu festival of Bonalu. I'm your host Nidhi, and it's goodbye from the entire production team.